Am I audible? Yes, sir. So yesterday we discussed about मोबाइल कॉमर्स। हमने कल क्या डिस्कस किया था? वेब के बारे में किया था, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स। तो उसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। सो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का रीज़न ये था कि स्मॉल डिवाइसेस में हम अपने वेब पेज को अगर प्रॉपरली देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें उसको एक तरह से रीएडजस्ट करना पड़ता है मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से। जो कंटेंट आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर, दैट कंटेंट कैन नॉट बी डिस्प्लेड ऑन मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल स्क्रीन पे अगर आपको डिस्प्ले करना है, यू नीड टू एडजस्ट द कंटेंट सो दैट इट इज विजिबल ऑन द मोबाइल स्क्रीन। So for that purpose, the web was invented. तो आपको कल जो है डिस्कस किया था, इट वाज वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये आपका वायरलेस प्रोटोकॉल था। इसमें कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी जिनके नाम मैंने कल आपको बताए थे, कौन कौन सी कंपनी, इन लोगों ने एक वेब फोरम बनाई। वेब फोरम, उसमें कंपनी कौन कौन सी शामिल थी? उसमें एरिक्सन थी, आपने नाम सुना होगा। एरिक्सन, सोनी एरिक्सन, मोटरोला, मोटरोला, नोकिया, एक अनवायर्ड प्लेनेट, अनवायर्ड प्लेनेट। ये कुछ इनके अलावा भी कंपनीज थी जो अलग अलग उस वक्त काम कर रही थी। वायरलेस कुछ मोबाइल आ चुके थे और पहले आपका वेब जो है वो कंप्यूटर पर पॉपुलर हुई। उसके बाद जो है छोटी स्क्रीन के डिवाइसेस आने शुरू हुए, मोबाइल आने शुरू हुए, आपके पास जो है वो पीडीएस आने शुरू हुए। तो वो कंटेंट जो आप कंप्यूटर पे देखते थे, it was felt that the content or the website should be available for small screen devices such as mobiles or PDAs। तो पीडीए जो छोटी स्क्रीन की एक तरह से कंप्यूटर आप उन्हें कह सकते हैं, उनके लिए ये सब काम किया गया कि बिकॉज इट वाज, यू कैन से, रिवॉल्यूशन कि आप जो है वो कंप्यूटर पर आप जो है वो कन्फाइंड नहीं है। यू कैन एक्सेस इंटरनेट एनीवेयर फ्रॉम योर पीडीएस और मोबाइल डिवाइसेस।
तो जो आप मोबाइल डिवाइसेस से एक्सेस कर रहे थे, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास कंप्यूटिंग पावर कम हो गई है, उसमें जो है वो स्क्रीन साइज कम हो गया, आपके पास प्रोसेसिंग पावर कम हो गई है, आपके पास मेमोरी कम हो गई। सो इन सब रिक्वायरमेंट, इन सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो है वो जो वेबसाइट आप कंप्यूटर पे प्रॉपरली देख पा रहे हैं वो छोटी स्क्रीन पर प्रॉपरली अवेलेबल या विजिबल नहीं थी। इस पर्पस के लिए यहाँ पर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो है वो डेवलप हुआ। इट्स सिमिलर टू वर्ल्ड वाइड वेब की, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब आपका काम करती है उस तरह से ये वेब जो है वो डिज़ाइन किया गया, और ये सिमिलर मैनर में काम भी करता है। तो इसका काम कल आपको बताया था कि इस तरह का है कि आपका यहाँ पर क्लाइंट साइड है, ठीक है, ये आपका क्लाइंट है, यहाँ पर वायरलेस गेटवे है, ये आप करेंगे हमारा वेब गेटवे है, और ये आपका सर्वर है, ओरिजिन सर्वर, जहाँ से आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। तो व्हाट इज बीइंग डन, क्या आपने जो वेबसाइट एक्सेस करनी है वो आपने रिक्वेस्ट भेजी, आपने वेब रिक्वेस्ट भेजी, एक तरह से वेब रिक्वेस्ट, ठीक है, उसको एनक्रिप्ट करके उसको चेन करके इसने एच टी टी पी रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। एच टी टी पी रिक्वेस्ट, ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये आपका नया प्रोटोकॉल है जो वायरलेस डिवाइसेस के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया। So whatever request you made to access any website, it is going through the web gateway. Web gateway में जाने के बाद ये HTTP request में convert हो गई जो आपने request भेजी थी. Now it's going to the origin server where the data is stored or which website you want to access. So you'll reach to the origin server. Once you reach to the origin server, the server will respond with the answer. ये आपकी रिक्वेस्ट थी, ये आपने क्वेरी भेजी थी, उसके बदले में आपको कुछ एच टी टी पी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स, ये आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। दिस रिस्पॉन्स विल अगेन कम back to the wireless application gateway, and then this will be converted, or you can say this will be uh, converted for display on small screen devices, ठीक है। तो यहाँ पे जो HTTP का रिस्पॉन्स आया था उसको वेब रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इट विल गो बैक टू द client device, that is maybe a PDA, a tablet, or some mobile screen, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोसेस है जिस तरह से ये काम कर रहा है कि आपके पास एक क्लाइंट साइड है, इस क्लाइंट साइड पर आपने रिक्वेस्ट भेजी, दिस रिक्वेस्ट इज गोइंग थ्रू द वेब गेटवे, web gateway is converting this request into HTTP request, and then it is being sent to the origin server where the data is stored, or whichever website you are using. For example, if you are using Google uh, website, then it will go to the Google server. अगर आप Yahoo की वेबसाइट यूज कर रहे होंगे तो Yahoo की वेबसाइट पे जाएगा, और whatever website you are using, it will go to that particular website or the web server, and then HTTP response will be made available by the server, and this will come back to the web gateway, and this response will be converted to the or you can say it will be adapted for display on the mobile screen or the small screen. So this response will be converted properly, and then it will be displayed on the सिस्टम ऑफ द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट के पास सिस्टम, उस सिस्टम पर ये डिस्प्ले होने के लिए तैयार होगी। जो भी कुछ आपने रिक्वेस्ट भेजी तो उसके हिसाब से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो द क्लाइंट इज यूजिंग माइक्रो ब्राउजर्स, ठीक है। क्लाइंट एक्सेस कैसे कर रहा है, क्लाइंट इज यूजिंग माइक्रो ब्राउजर। माइक्रो ब्राउजर क्या है, जो आप उस पर मोबाइल स्क्रीन पे ब्राउजर यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ब्राउजर, ठीक है। तो आपके पास माइक्रो ब्राउजर है, उस माइक्रो ब्राउजर में आपने वेबसाइट एक्सेस करने की रिक्वेस्ट डाली, दिस रिक्वेस्ट इज encrypted and then sent to web gateway, web gateway ने उस रिक्वेस्ट निकला, उसमें HTTP रिक्वेस्ट में कन्वर्ट किया एंड सेंड टू दी नेक्स्ट सर्वर और जिन सर्वर,
देन ऑरिजिन सर्वर इज रिटर्निंग द एचटीटीपी रिस्पांस। उसके बाद ये रिस्पांस आपका जो है वो वेब गेटवे के पास आया, वेब गेटवे ने उसको इनक्रिप्ट करके क्लाइंट को रिटर्न कर दिया, एंड देन द response will be displayed on the client machine, that is a PDA or mobile screen. So this is how this web is working. वेब में काम करने के लिए यहाँ पर आप जब कंप्यूटर में डिस्प्ले करते हैं, यू आर यूजिंग HTML, ठीक है, यहाँ पर HTML यूज कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप WML यूज कर रहे हैं, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ वायरलेस स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए यू आर सेइंग दैट दिस इज वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, सो दिस इज कॉल्ड WML, ठीक है। तो इस तरह आपके पास मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वॉट एवर वेबसाइट यू वांट टू एक्सेस थ्रू योर मोबाइल, यू कैन open the website in the browser, and then you can made a request to the server whatever you want to do. Maybe that is a um, search engine type website, for example Google or Yahoo or any other, or it may be some e-commerce website, or it may be some educational website, whatever type of website is that you can make the request through the web gateway, and then request will be sent to the origin server or the server where the data is stored, and then a proper response will be generated by the server. It will be sent back, and then it will be adapted for display on the mobile screen. So this is how web is working. उसके बाद जब आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं या एम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर यूजिंग कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑन मोबाइल डिवाइस और द कंप्यूटर डिवाइस। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट ई कॉमर्स, ठीक है। वो आप अगर इसमें जो है वो मोबाइल पे काम कर रहे हैं, देन वी आर कॉलिंग इट मोबाइल कॉमर्स, ठीक है। मोबाइल कॉमर्स को हम शॉर्ट में एम कॉमर्स कह रहे हैं। मोबाइल कॉमर्स हमारी जो है वो ये एम कॉमर्स कहला रही। अब मोबाइल कॉमर्स में आपने क्या किया, यू आर एबल टू एक्सेस एनी वेबसाइट, सो यू स्टार्टेड यूजिंग फॉर एग्जांपल कमर्शियल वेबसाइट, ठीक है। तो आप जो है अगर मोबाइल से कमर्शियल वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, देन फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग फ्लिपकार्ट और अमेजन और एनी अदर वेबसाइट। तो आप अगर कोई कमर्शियल वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उस केस में आपको यहाँ पर कुछ इश्यूज जो हैं वो आएंगे रिगार्डिंग सिक्योरिटी, ठीक है। आप अगर मोबाइल से वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी क्या है। आपने मान लिए अगर आप अपना पासवर्ड वहाँ पर इनपुट करते हैं वेबसाइट पर, सो हाउ दिस पासवर्ड विल बी स्टोर्ड एंड हाउ दिस पासवर्ड विल बी सेंड टू द वेबसाइट। यू वांट टू एक्सेस सपोज नेट बैंकिंग, या तो इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करना चाह रहे हैं थ्रू सम मोबाइल डिवाइस, हाउ विल यू एक्सेस द मोबाइल बैंकिंग ऑन योर मोबाइल डिवाइस, ठीक है। अब मोबाइल बैंकिंग को अपने डिवाइस पर कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए फिर आपके पास कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, एंड टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज यू नीड टू हैव अ सिक्योरिटी पॉलिसी कि आप जो है कैसे अपने ट्रांजैक्शंस को, अपने डेटा को जो है सिक्योर करेंगे। इसके लिए एक आपको सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। हर वेबसाइट जो है वो अपने हिसाब से कोई ना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएगी कि आप अगर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हाउ टू मेक द ट्रांजैक्शन सिक्योर, कैसे आपका ट्रांजैक्शन जो है वो सिक्योर रहेगा। इस पर्पस के लिए there's a need of security policy and it will be implemented by the वेबसाइट जो भी आप एक्सेस करते हैं उस वेबसाइट के थ्रू जो है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यू माइट हैव सीन व्हेन एक्सेसिंग सम कमर्शियल वेबसाइट, आप अगर कहीं पेमेंट करते हैं तो वो दिखाता है कि एनक्रिप्टेड बाय 128
बिट की और एनक्रिप्टेड बाई 256 बिट की, यानी आपका ट्रांजैक्शन जो है, योर ट्रांजैक्शन इज सिक्योर। पीसीआई कंप्लाइंट जो कहलाता है, तो उसमें लिख कर आता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है दिस इज सिक्योर बाई 28 बिट, सॉरी 128 बिट ट्रांजैक्शन। 128 बिट उसमें जो है वो आपका एक तरह से डेटा को सिक्योर करने के लिए आप यूज कर रहे हैं 128 बिट इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, आप जो है 256 बिट इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वेबसाइट को करना है। सो इट मेक्स द ट्रांजैक्शन सिक्योर। ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन जो है वो सिक्योर होगा, क्योंकि आप अगर नॉर्मल किसी को ईमेल भेज रहे हैं या आप जो है सिर्फ ब्राउजिंग कर रहे हैं, इट इज नॉट एज रिस्की एज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, आप अगर सिर्फ वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो इतना आपको जो है सिक्योरिटी का रिस्क नहीं। मे बी कोई कोई आपके सिस्टम को हैक कर ले और आपके सिस्टम को एक्सेस कर ले, बट generally this doesn't happen. The risk become very important when we are using some financial transaction। ठीक है, जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस वक्त आपका रिस्क जो है वो इट इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज पासवर्ड प्रोटेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट इशू। ठीक है, हाउ टू मेक योर पासवर्ड सिक्योर। ठीक है, जनरली पीपल आर नॉट विलिंग टू रिमेंबर न्यूमरस कॉम्प्लेक्स पासवर्ड एंड चेंज देम आफ्टर। हमने देखा होगा कि आपने जो पासवर्ड बना रखा है, यू मे नॉट हैव चेंज इट फॉर ईयर्स। अगर आपने पुराना पासवर्ड बना हुआ है, even not for financial transactions, we are not changing the passwords. For example, I have not changed my Google password for years because it's not that much important for me to change the password on every month or every year, because we are not having that much of mails or that much of internet transactions. So people are generally not willing to make a very cryptic password and remember them, because if you are this is the problem with password, that if you are trying to make your password very secure, very strong, then it is also very difficult to remember the password. And if you make password easy to remember, then the security of password is compromised. So you have to make a balance between security and you can say remembrance of the पासवर्ड, कि आप उसको कितनी आसानी से याद रख सकते हैं और पासवर्ड को कितना मुश्किल बना सकते हैं। दोनों चीज़ें आप एक साथ अचीव करना है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो सम पीपल यूज पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स। आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर, there are some software which offer um, saving your password on the इंटरनेट और दी सिस्टम। आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो HP का मन पासवर्ड मैनेजर मिल जाएगा, आपको जो है डेल का पासवर्ड मैनेजर मिल जाएगा। सो दीज कंपनीज आर ऑफरिंग पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स। दीज टूल्स आर एबल टू remember the password for different sites, and when you visit that particular site, and password will be auto-filled, so you need not remember. But you cannot store password in these tools without having a master password. If you are storing all password in one particular password management tool, then you need to have a strong password for that password management tool. So at least we have to remember one password, and rest of the care can be taken by the password management tool. But if your password is weak in password management tool, then you are also vulnerable to the
सिक्योरिटी इश्यूज। ठीक है, कि आपने जो पासवर्ड मैनेजमेंट टूल यूज कर रहे हैं, अब आपने सारे उसमें जो है स्टोर कर दिए अपने पासवर्ड्स। इट्स लाइक कि आपने अपना जो है वो सारी कीमती चीज़ें जो एक जगह स्टोर कर दी हैं। तो इट्स गुड आपने एक जगह स्टोर कर दी, बट यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर। ठीक है, आप अगर सारा अपना सामान जो है वो एक ही जगह रखते हैं और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी को कुछ इंतजाम ना करें, देन इट्स डिफिकल्ट टू मेक देम सिक्योर। ठीक है, आपकी जितनी वीक लिंक होगी, या ये समझ लीजिए कि आपने सारा सामान अपना एक जगह रख दिया और उसको लॉक नहीं किया, उस रूम को या उस अलमीरा को, देन इट्स वेरी, यू कैन से, वल्नरेबल टू दी थेफ्ट। आपका बहुत ही उसमें थेफ्ट के लिए भी बहुत ही आसान टारगेट एक तरह से हो गया। तो ये चीज़ जो है पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स के साथ भी होगी कि आपने जो पासवर्ड मैनेजमेंट टूल यूज़ किया हुआ है, अगर आप उसको प्रॉपरली सिक्योर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई अच्छा पासवर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, देन इट विल बी stolen, or it will be hacked by some hacker if they gain access to the system. Individuals and business have had concerns about security issues since internet became a business communication tool. पहले आपका इंटरनेट जो it was a tool used by researchers, by scientists, and all those people. But as it became a business communication tool, then the security concerns have increased because now financial transactions are involved. पहले आप जो है मेल भेज रहे हैं किसी को, कोई उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, बट नॉट ऑल ट्रांजेक्शन्स और ऑल मेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप जो है कुछ अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, या आप जो है कोई अपना मेल भेज रहे हैं किसी को, कुछ आपको जो है किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, लेनी है, इस तरह के मैसेजेस में जो है वो इस तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं था। बट एज इंटरनेट बिकेम अ बिजनेस कम्युनिकेशन टूल, अब आप जो है बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं कि आपको कितना चेक भेजना है, कितना पैसा भेजना है, ऑल activities are done through internet. So it has developed the concern about security of communication। ठीक है, कि आपकी कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी है, उसके रिगार्डिंग जो है वो कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो इंडिविजुअल्स को भी होती हैं और बिजनेस हाउसेस को भी होती हैं। तो आपके पास जो भी एसेट होता है उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो फिजिकल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फिजिकल जो है वो प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू सिक्योर सम फिजिकल thing, then you have to use physical devices। आपको जो है उसमें आपने देखा बैंक्स में क्या होता है, वहाँ पर फिजिकल फॉर्म में कैश रखा हुआ है, सो बैंक्स हैव टू अपॉइंट गार्ड्स। ठीक है, अलार्म्स लगाने पड़ते हैं कि अगर गार्ड जो है इधर उधर हो और कोई उसमें अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर जाए तो वो वहाँ पर अलार्म बज जाए। फायर प्रूफ डोर्स होते हैं कि आप उसमें जो है वो आसानी से आग लगा कर भी नहीं तोड़े जा सकते। ठीक है, सिक्योरिटी फेंसेस रहती हैं, सेफ और वॉल्व्स रहते हैं, बॉम्ब प्रूफ बिल्डिंग्स होती हैं, इस तरह की जो है वो फिजिकल मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं। बट दीज थिंग्स आर fine with physical, you can say, assets, but where logical assets or soft assets are concerned, these are of no use. Okay? You cannot use or you cannot secure them by using physical means. So you have to employ some non-physical means। नॉन फिजिकल मीन्स का मतलब कि आपको जो इंक्रिप्शन करना है, यहाँ पर कोई आपकी फिजिकल सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है। यू कैन यूज योर डेटा विद इंक्रिप्शन, तो उससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ गई। यू कैन यूज द पास यू कैन यूज पासवर्ड मेजर
ठीक है, आप जो है पासवर्ड यूज करते इसी पर्पज से यूज करते हैं कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर है. You are giving your username when you are opening your mail, then you are giving your username and then your password. If there is no need of password, then anybody can open any other person's mail. So you want some kind of security. For that purpose, a security measure has been taken, and that is called password. तो आप जो है जनरली पासवर्ड यूज करते हैं, इससे आपका जो डेटा है वो सेफ रहता है. अब आपके जो मेल्स हैं वो और कोई नहीं पढ़ सकता है until unless द पर्सन नोज अबाउट योर पासवर्ड. ठीक है, जब तक उसको आपका पासवर्ड नहीं मालूम होगा तब तक वो कोई भी आपका मेल जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता है. एंड व्हाट अबाउट थ्रेट? हम जो है जब भी थ्रेट की बात करते हैं, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेट? थ्रेट करें तो थ्रेट से क्या मतलब होता है? थ्रेट इज एनीथिंग anything posing danger to computer assets. कोई भी चीज जिससे आपके कंप्यूटर एसेट्स को खतरा है, दैट विल बी कॉल्ड अ थ्रेट. So whenever a transaction is being performed on internet, you have to make sure that there is no threat to the transaction. इसमें आपके पास जो है वो थ्रेट किस तरह का होता है? There may be some person looking over from your shoulder, and if person is able to record your password, maybe directly by seeing at the keyboard जहाँ आप पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन वहाँ देख लेता है आपको पासवर्ड एंटर करते हुए, देन द पर्सन कैन एक्सेस योर अकाउंट. ठीक है, तो इस तरह के भी जो है वो केसेस हुए हैं जहाँ पर किसी ने आपका पासवर्ड देख लिया या किसी ने आपका पिन नंबर देख लिया, देन आपका जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया. ठीक है, so this is a threat. And nowadays the cases have happened that in some cases some kind of recording device has been installed in the for example, a room where the transaction is being taken is taking place. For example, you can consider the case of ATM. ठीक है, एटीएम में आप जा रहे हैं और आप अपना पिन इनपुट कर रहे हैं, वहां पर किसी ने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिया. ठीक है, सो योर पिन इज ऑल्सो रिकॉर्डेड. ठीक है, आपका पिन जो है वहां पर रिकॉर्ड हो गया, तो ये भी आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ, जो एक तरह से जिस चीज को आप हैं वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, तो ये भी एक काइंड का थ्रेट है कि आपका जो है वो पासवर्ड किसी ने देख लिया. And sometimes hacker obtain unauthorized access to your computer and the network, and they are capable of stealing your passwords or the important data stored on your computer or mobile device. So nowadays it has become very important that you make all your transaction very secure. ठीक है, आप जो है इसको अपने transactions को secure बनाएं. कंपनीज मस्ट आइडेंटिफाई रिस्क. ठीक है, जो कंपनीज हैं उनको क्या काम करना चाहिए अपने सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से? दे शुड आइडेंटिफाई द रिस्क. कंपनी शुड आइडेंटिफाई द रिस्क्स, determine how to protect assets,
how to protect assets, या आपको पता लगाना है भाई कैसे आप जो है रिस्क को कम कर सकते हैं, कैसे अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड कैलकुलेट हाउ मच टू स्पेंड ऑन ऑल दीज मेजर्स। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट के लायक कि आप जो है इस सिक्योरिटी रिस्क को कैसे हैंडल कर रहे हैं, हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ इशू जो भी आपके पास सिक्योरिटी से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी है, तो अपने अटेंडेंस मार्क कर दी। आपका सिक्रेसी refers to protecting against unauthorized unauthorized data disclosures and ensuring data source authenticity। यानी आपका जो सीक्रेसी है, तो हमारा पासवर्ड जैसे सीक्रेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सीक्रेसी का मतलब इट रेफर्स टू द प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डेटा डिस्क्लोजर, यानी आपका अनऑथराइज्ड डेटा डिस्क्लोजर ना हो, यानी कोई आपके पासवर्ड को देखे नहीं, या जो पासवर्ड कोई बता रहा है, मतलब जो आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं किसी भी पर्सन को अलाउ कर रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द डेटा इज कमिंग फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स। सो आपको डेटा की ऑथेंटिसिटी जो है वो मेंटेन करनी है। इंटीग्रिटी is preventing unauthorized data modification, unauthorized data modification। आपकी इंटीग्रिटी जो है वो इससे मेजर की जाएगी कि आपका डेटा जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन से कितना सिक्योर है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अकर इंटीग्रिटी में आप कंसीडर कर सकते हैं कोई केस। ठीक है, इंटीग्रिटी वायलेशन अकर्स व्हेन एन ईमेल मैसेज इज इंटरसेप्टेड एंड चेंज बिफोर रीचिंग डेस्टिनेशन। इज इट क्लियर, इंटीग्रिटी में आप कंसीडर कर सकते हैं कि इंटीग्रिटी वायलेशन। ठीक है, ये रहेगी वायलेशन occurs
when an email is intercepted and changed। ईमेल से मतलब कोई भी आपका मेल है, कोई भी ट्रांजैक्शन को आप कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव you have sent the message to the bank that you want to withdraw 1,000 rupees from your account, ठीक है। और अगर ये मैसेज आपका बैंक में पहुंचने से पहले 10,000 में कन्वर्ट हो जाए, so bank will allow withdrawal of 10,000, and since you just wanted 1,000, so 9,000 जो है वो आपके कहीं गड़बड़ हो जाएंगे। So this will happen because of integrity violation, intercepted and changed before reaching to the destination. Before reaching destination, ये आपका डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले ही आपने उसको एक्सेस किया। आपसे मतलब कोई भी अनऑथराइज पर्सन ने उसको बीच में से एक्सेस किया, इंटरसेप्ट किया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद उसने चेंज किया और फिर आगे भेज दिया, सेंड टू नेक्स्ट नोड। जो भी आपको करना था, अब आपका काम हो गया। वो जो हैकर था उसने आपको मैसेज चेंज कर दिया ना, योर मैसेज इज चेंज। तो आपका जो है मैसेज, ओरिजिनल मैसेज नहीं पहुंचेगा, योर मैसेज विल बी चेंज। और इसी पर्पस के लिए जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स जो है वो बनाए जाते हैं, सो दैट इट कैन बी वेरीफाइड कि जो लिखे हुए हैं स्टेटमेंट अबाउट एनी एसेट, ये आपका अवेलेबल है या नहीं फिजिकली, ये आपका एसेट जो है वो अवेलेबल है आपका, ठीक है। हम लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी। सभी ने कर दिए। एक, दो, पर लोग ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और अटेंडेंस कम लोगों ने मार्क करी। जल्दी मार्क कर दिया आप लोग अपनी अटेंडेंस, एंड आई एम स्टॉपिंग हियर। विल डिस्कस इट फर्दर, बट अपनी अटेंडेंस आप लोग जरूर मेंशन कर दी यहाँ पर बिफोर लीविंग द मीटिंग। ओके।